Assalamu alaikum friends. Welcome back to ChemMystery Unlocked. In today's lecture, we will be covering features of covalent substances and allotropes. Let's start this session with features of covalent substances. The first point is covalent substances may be solid, liquid, or gas at room temperature. To understand this, let's see some examples. The first example is of iodine. Iodine is a covalent substance. Iodine is a solid at room temperature. Now let's see water. Water, H2O, is also a covalent substance. Water is liquid at room temperature. Carbon dioxide is also a covalent substance. CO2, carbon dioxide. Carbon dioxide is gas at room temperature. So, covalent substances हमारे पास solid भी हो सकते हैं, liquid भी हो सकते हैं और gas भी हो सकते हैं room temperature पे. हमारे पास की कुछ एग्जाम्पल्स हैं ताकि हम इसको समझ सकें. हमारे पास सबसे पहले है आयोडीन. आयोडीन हमारे पास कोवलेंट सब्सटेंस है और आयोडीन सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे. फिर हमारे पास वाटर H2O है. वाटर हमारे पास कोवलेंट सब्सटेंस होता है और ये हमारे पास लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे. फिर हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड CO2. कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कोवलेंट सब्सटेंस है एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस है हमारे पास रूम टेम्परेचर पे. Now let's move on to the next point. Most have low melting boiling points because the intermolecular forces are weak and easy to overcome. The covalent substances, most of them have low melting boiling points because the intermolecular forces are weak. The intermolecular forces between them are weak and they are easy to overcome, and there's no need of high amount of energy to overcome them. So they have low melting boiling points. हमारे पास बहुत सारे कोवलेंट सब्सटेंसेस के लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं क्योंकि वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से, जो कि हम इजीली ओवरकम कर सकते हैं. However, these are exceptions. Substances with giant covalent structures like diamond are different and have very high melting points. Substances जो कि हमारे पास giant covalent structures हैं जैसे कि diamond है, वो different है हमारे पास क्योंकि वो बहुत ज़्यादा high melting point होता है diamond का because of strong intermolecular forces which require high amount of energy, so they have high melting points. So diamond have high melting point. Let's move on to the third point. They don't conduct electricity as they have no free electrons or ions. हमारे पास ये कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते या फिर आयंस नहीं होते. Let's see, graphite is an exception because it conducts electricity due to delocalized electrons. Graphite हमारे पास exception है इन सब में क्योंकि graphite conducts electricity due to delocalized electrons. free moving electrons होते हैं, उनकी वजह से graphite conduct करता है electricity. Let's move on to allotropes now. Same element in the same physical state having different structures and different physical and chemical properties.
Now let's understand this definition. To understand this, here we have two allotropes of carbon, diamond and graphite. Diamond has a strong, stable and 3D structure. That is why it is super hard and used in cutting tools and jewelry. On the other hand, graphite has a layered structure. These layers can slide over each other easily, which is why graphite feels slippery and breaks easily. And that is why it is also used in pencils. हमारे पास डायमंड स्ट्रॉन्ग होता है और स्टेबल होता है, 3D स्ट्रक्चर में होता है, एंड देन इसलिए ये हमारे पास सुपर हार्ड होता है. तो ये हमारे पास यूज होता है कटिंग टूल्स में और ज्वेलरी में. ऑन दी अदर हैंड हमारे पास ग्रेफाइट है. ग्रेफाइट लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है और easy to separate होता है. As you can see, this is very weak, like they can slide over each other. So graphite इसलिए slippery भी होता है और breaks easily, and it is used in pencils. Let's move. Oh, sorry. So even though both are made of only carbon atoms, their properties are completely different because of how the atoms are arranged. हमारे पास सेम एलिमेंट से बने हुए हैं दोनों और सेम फिजिकल स्टेट में है, पर इनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं. As you can see, their structures are different and different physical and chemical properties. They have different chemical and physical properties. Now let's compare them. Graphite versus diamond. Okay, let's start with the first point of graphite. Each carbon is directly attached to 3 more carbons. Okay, let's see this. Each carbon of graphite is directly attached to 3 more carbons. As you can see, this one is attached to this one and to this one and to this one. So it is attached to 3 more carbon. Let's see the point of diamond now. Each carbon is directly attached to 4 more carbons. Okay. Let's see this one. Or this one. Let's see this one. This carbon is attached to this one, and to this one, and to this one. So it is attached with 4 carbon atoms. With 4 carbons. Okay, let's see graphite's second point. It conducts electricity because of free moving electrons. Graphite, as we discussed, graphite conducts electricity because of free moving electrons. Free moving electrons की वजह से graphite conducts electricity. On the other hand, diamond, it does not conduct electricity due to no free electrons or ions. डायमंड के हमारे पास डायमंड कंडक्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि इसके पास फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स या फिर आयंस नहीं है. थर्ड पॉइंट, it has high melting point because strong covalent bond within layers require high amount of energy to break. हमारे पास ग्रेफाइट का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है क्योंकि हमारे पास स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है. सो इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट. ऑन द अदर हैंड, डायमंड, इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स. हमारे पास डायमंड का भी यही है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है टू ब्रेक स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स.
It consists of layers that can slide over each other due to weak forces between layers. As we discussed that it consists of layers. Graphite consists of layers that can slide over each other, जो कि एक दूसरे के ऊपर से slide कर सकती हैं due to weak forces हैं between layers, इस वजह से. It is soft and slippery because layers can slide over each other. That is why it is used as pencil lead, lubricant and in electrodes. ये हमारे पास soft होता है, slippery होता है, और because layers can slide over each other, layers इसकी slide कर सकती हैं एक दूसरे के ऊपर से. और फिर ये uses हैं बाकी के जहाँ जहाँ यूज होता है. And then diamond now. Diamond is extremely hard. Diamond हमारे पास बहुत hard होता है because of its strong covalent bonding. Strong covalent bonding होती है, इसलिए diamond बहुत ज़्यादा hard होता है. And three dimensional structure की वजह से भी. Let's see this now. These are the key points. Always remember these. All simple molecular structures have low melting points because they are held together by weak intermolecular forces which require little energy to overcome. Okay, so simple molecular structures, all of them have low melting points because they are held together by weak intermolecular forces. The forces between these molecular structures are very weak. So they require very little energy to overcome them. हमारे पास जितने भी सिंपल मॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट लो होता है क्योंकि वो हमारे पास एक दूसरे से करीब रहते हैं वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से. लाइक दे आर बॉन्डेड टुगेदर विद वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो कि बहुत कम little amount of energy require करता है to overcome. Now giant molecular structures have high melting points. It is the opposite because many strong covalent bonds must be broken which requires a large amount of energy. Giant molecular structures का high melting point होता है क्योंकि बहुत सारी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक करने पड़ते हैं, उसकी वजह से हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है. लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक देम. नाउ लेट्स सी सम uses of graphite. It is used in lubricant because of the layers that can slide over each other easily. Lubricant में यूज होता है क्योंकि layers इसकी slide हो सकती हैं एक दूसरे के ऊपर से. And it is used in electrodes because of free moving electrons that can conduct electricity. कि हमारे पास यूज होता है इलेक्ट्रोड्स में क्योंकि फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो कि कंडक्ट कर सकती हैं इलेक्ट्रिसिटी. Let's see the uses of diamond now. It is used in drilling because of hard surface. As we discussed, it has a very hard surface, so it is used in drilling. It is used for jewelry as it is transparent and shiny. ये हमारे पास ट्रांसपेरेंट और शाइनी होता है तो इसलिए हमारे पास ज्वेलरी में यूज होता है. आज तक हमने अभी जितना कर लिया वो बहुत है. इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से मोल्स एंड स्टिचियोमेट्री स्टार्ट करेंगे. we will be starting off with moles and stoichiometry in our next lecture. तो तब तक के लिए दुआओं में खास याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.